This episode is powered by Hubhopper, a platform all about podcasting. So, welcome to another episode of Podcast Per Charcha. In this very special episode, we are delighted to have Anurag Sharma as our guest. He's an award-winning podcaster, a content creator, a digital marketer. His podcasts ranking in the top charts. It's I can say IMDb highly rated podcast. I'll name some podcasts like Namaste India, The Socially Desi Show, and Hustle Launch. So it's a great honor, it's a great privilege to have the one and only Anurag Sharma on Podcast Per Charcha. So Anurag, welcome to Podcast Per Charcha. Hey Harsh, thank you so much for having me here. Loved the intro, and I've seen your other episodes with other guests. I'm really honored to be part of this. Looking forward. All right, thank you so much. So Anurag, before we start off, सबसे पहले I would like to know about your adaptation towards podcast, because जैसा if I'll just start with this particular podcast, Socially Desi Show. If I'm not wrong, Socially Desi Show is also a blog. It's a website. And अगर आप उसके बारे में सबसे पहले बता सकते हैं how it started and further adaptation of that particular thing into a podcast. Yeah, over to you. Okay. So, interesting story. Back in 2019, I started something with a friend of mine. वो यहाँ पे नोएडा में ही he wanted to start something. It was kind of a modeling and acting institute that he wanted to start, and he said, Anurag, yaar, because you come from a marketing background, a business consulting background, so can you help me set this up? थोड़ा सा marketing में help कर देना, थोड़े operations में थोड़ा मदद कर देना. It will really be useful. So I said, okay, ठीक है, करते हैं कुछ आपके साथ, and we started that. 2019 में when we were doing it, we had a full-fledged studio here in Noida. So the idea was कि जितने भी models आते हैं, actors आते हैं, give them like a full-fledged amenities filled studio जहाँ पे they can do their portfolios, acting classes कर सकते हैं, camera में अपने आप को practice कर सकते हैं देख के. That is when this entire Socially Desi का concept मेरे दिमाग में आया, because I was really intrigued by the way Karan Johar used to do his Coffee with Karan. Okay. आप उस शो को कुछ भी बोल दीजिए, but it's a highly successful show. Yes, और yes, true. हर एक I think जो भी Bollywood में इंटरेस्ट रखता है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज की लाइफ में इंटरेस्ट रखता है, वो उस शो को देखना चाहता है. राइट, तो उसमें मसाला भी मिलता है उसको, एवरीथिंग. मैंने सोचा कि यार सेलिब्रिटीज की लाइफ में सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में क्या चल रहा है, राइट, हाउ इज हिज और हर लाइफ एंड व्हाट इज गोइंग ऑन. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपना एक ट्विस्ट दिया जाए, एंड लेट्स डू समथिंग, एंड आई टर्न दिस थिंग कॉल्ड सोशली देसी. मैंने सोचा सोशली देसी में क्या होगा कि दिस स्टूडियो तो है ही मेरे पास. आई वुड फ्लाई इन ऑल माय गेस्ट्स, ऑल डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स, इन सबको मैं लाऊंगा. विल हैव अ डे फिल्ड विद कंटेंट, विल टॉक, विल डिस्कस, एंड वो सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपने स्टूडियो में, एंड उसको एक वीडियो शो की तरह हम लोग लॉन्च करेंगे. दिस वाज द आइडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली 2020 में क्या हुआ सबको पता ही है. Everything shut down, and unfortunately we also had to shut down our studio. And India में आपको पता ही है कि basic amenities and basic services ही start नहीं होती, तो हमने सोचा कि यार स्टूडियो में तो कौन आएगा उस टाइम पे. So eventually we thought of closing it, but then मैंने सोचा कि यार इतना concept बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, I don't want to stop here, I don't want to just sit on it कि मैं वेट करता रहूं कि कब लॉकडाउन खुलेगा और कब मैं वापस से स्टूडियो ओपन कर सकूंगा. So I thought कि why don't I start a podcast around it. ऑडियो से ही शुरू करते हैं, मे बी शायद आगे जाके वीडियो फॉर्मेट भी इसका मैं बनाने लग जाऊं. So that is how Socially Desi actually started. तो वेबसाइट मैंने जल्दी से ले लिया, सब कुछ मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था इसको सिक्योर करने के लिए कर लिया, कंपनी रजिस्टर करा ली, सब कुछ कर लिया, एंड ब्लॉग लिखना शुरू किया, एंड साथ ही साथ पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया. There's a lot of quality content on the website, I've seen that. उसमें काफी ब्लॉग्स हैं. सो ये जो आपका, जैसे आपने उस टाइम पे पॉडकास्ट का आइडिया है आपको कि ऑडियो वर्जन में आपको शुरू करना है, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आप ये दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, उससे पहले तो आपका वीडियो का प्लान था, आपने पूरा जो, बिकॉज सो मेनी इनसाइट्स टू शेयर अबाउट पॉडकास्टिंग एंड ऑल, यू कंडक्ट वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, तो आपने इससे पहले रिसर्च वगैरह आपकी कब से चालू हुई थी पॉडकास्ट से रिलेटेड, स्पेसिफिकली द ऑडियो वर्जन? See, podcast, I used to listen to a lot of Joe Rogan, to be honest, and
जब मैं उसको सुनता था तो आई यूज टू फील केयर बिकॉज सी ऑडियो में आई एम नॉट वेरी न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज आई यूज टू सिंग ऑल्सो, रिकॉर्डिंग भी करते थे हम लोग, तो म्यूजिक की वजह से आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू ऑडियो समवेयर और द अदर। आई हैड अ पोर्टेबल स्टूडियो ऑल्सो एट होम, तो ऑडियो इंटरफेस क्या होता है, हेडफोन्स, माइक्स कौन से लेने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब का मुझे एक बेसिक आइडिया था। और एडिटिंग भी मैं कर लेता था, कौन से प्लगइन्स लगाने हैं, यू नो नॉइज सप्रेशन में क्या करना है, EQ क्या करना है। सो बेसिक आइडिया मुझे सब कुछ था विद रिस्पेक्ट टू म्यूजिक प्रोडक्शन। सो जब ऑडियो की बात आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पॉडकास्ट का रिसर्च मैंने 2020 में ही शुरू किया। मैंने बोला कि चलो अब अगर मुझे खुद को बनाना है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड लुक एट। सुनता था मैं पॉडकास्ट, इंटरनेशनल पॉडकास्ट सुनता था, अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉडकास्ट नहीं सुनता था उस टाइम पे। बट 2020 में ही मैंने फिर सोचा कि यार इफ आई हैव टू बिकम अ पॉडकास्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू। एंड लकीली मुझे समझ में आया कि 70-80% आई ऑलरेडी नो द थिंग्स, so it will be still an easier ride for me to actually start something like this. Definitely for creators, for musicians, voice over professionals, एक एडवांटेज हो जाती है कि ये जो माइक्रोफोन और ये सारी हैसल नहीं होती है, हमें पता होता है पहले से। करेक्ट। सो स्टार्टिंग द एपिसोड्स ऑन सोशली देसी शो, वो एग्जैक्टली आपने कब शुरू किया, यू नो हाउ यू स्टार्टेड अपलोडिंग एंड एवरीथिंग? So 8th of April, I remember it's my brother's birthday. उस दिन मैंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया था 8th of April को, एंड आई थिंक उसके फॉलोइंग वीक में ही मेरा फर्स्ट एपिसोड आया था जहाँ पे मैंने ट्रेलर बनाया था सोशली देसी शो का, और एक बढ़िया सा मैंने मोनोलॉग बना के डाल दिया था कि दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ द पॉडकास्ट। बिकॉज जो भी मैंने रिसर्च की, समझा, उनसे मुझे यही पता चला कि यार हे फर्स्ट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि है क्या ये पॉडकास्ट, क्यों बना रहे हो, क्यों सुनना चाहिए आपको। उस टाइम पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस टाइम मैंने गलती ये की थी कि मैंने एक्चुअली सी नाउ आई रियलाइज कि जब भी आप पॉडकास्ट अपना रिलीज करें, कम से कम 3-4 एपिसोड एक साथ रिलीज करिए इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, बिकॉज दैट गिव्स अ चांस टू योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि यार अनुराग के जो पॉडकास्ट है वो एक्चुअली में मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको सुनने में। मैंने जो गलती करती थी, मैंने सिर्फ अपना वो ट्रेलर डाल के छोड़ दिया था और मैं सोचा था अगले हफ्ते पहला एपिसोड डालूंगा, तो वो गलती हो गई थी। बट देन यू नो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड in the past, and this is what I also tell my friends, also podcaster friends, कि जब भी आप नया कोई पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट 3-4 एपिसोड्स डाल के एक साथ रिलीज करिए, so that people can listen to multiple episodes of yours and then figure out कि यार should I even spend time on this podcast or not। तो एटलीस्ट उससे ना आपको एक अर्ली एडवांटेज मिल जाता है, एक थोड़ा लॉयल फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। For the right judgment and consistency, I can add on कि दिखता है कि हाँ यहाँ पे और एपिसोड्स आने वाले हैं। True. Correct. What about Namaste India? How that started? Namaste India की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। शिवम is my co-host there, शिवम गर्ग, he is like a brother from another mother. We met online actually। हम लोग मैं काउंटर स्ट्राइक का बहुत बड़ा फैन हूँ, कॉलेज के टाइम से खेलते आ रहा हूँ। इंजीनियर हूँ, तो काउंटर स्ट्राइक तो मतलब वो नसों में होता है, तो काउंटर स्ट्राइक खेलते थे हम लोग। तो 2000 आई थिंक आई मेट हिम इन 2018 या 19 ऑनलाइन। हम लोग खेल रहे थे एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट रैंडम लॉबीज में, मैं अपने आप को एंटर करता है, सडनली आई एंडेड इन देयर लॉबी एंड 4-5 फ्रेंड्स हैं वहां पे एंड दे आर यू नो फ्रेंड्स फॉर लाइफ आई थिंक नाउ। एंड उसमें से एक शिवम गर्ग भी हैं। उनने भी थोड़ा बहुत यू नो थोड़ा रेडियो और उन सबका कॉलेज के टाइम पे उनने काम किया था। तो इनिशियली क्या हुआ, जब शिवम के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था, ऐसे क्या मैंने शिवम एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है सोशली देसी, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि क्यों ना कुछ डेली बेसिस पे कर सकते हैं कि नहीं। सोशली देसी वाज हैपनिंग ऑन अ वीकली बेसिस, बट मैं सोचा था कि डेली कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड लॉकडाउन था तो घर पे ही बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि टाइम है अपने पास, व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट विद दिस। तो शिवम को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने बोला यार आइडिया अच्छा है। देन वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग, दोनों ने हमने ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया एंड देन वी सेड कि यार क्यों ना एक डेली एपिसोड बनाया जाए जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि विल चेक आउट ऑल द न्यूज ऑफ दैट डे, एंड उसमें से जो हमें लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इम्पैक्ट करती है आपकी और हमारी लाइफ ऑन अ डेली बेसिस, दैट व्हाट वी से इन आवर इंट्रो आल्सो, कि हर एक न्यूज ना, देखो अभी क्या हो गया है कि पूरे मीडिया में ना इतना ज्यादा नॉइज है कि लाइक यू कांट रियली फिगर आउट कि यार इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है। सो व्हाट वी डू इज कि हम लोग पूरा स्क्रीनिंग करते हैं अपने एंड से शाम को बैठ के, एंड वी फिगर आउट कि आज के पूरे दिन में ये कौन सी 1 या 2 ऐसी न्यूज थी जिनने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है हमारी लाइफ को,
उसको हम लोग कवर करते थे अपने ओन स्टाइल में, रॉ ओपिनियटेड स्टाइल में करते थे। वो हमने शुरू किया। एक प्रॉमिस हम लोगों ने अपने आप से किया कि भैया कुछ हो जाए हम लोग एपिसोड नहीं छोड़ेंगे, भले मैं हूँ, तू है, नहीं है, बट वी विल इंश्योर कि द एपिसोड इज गोइंग आउट ऑन अ डेली बेसिस नो मैटर व्हाट हैपेंस। नाइस। एंड so far I think 1121st episode कल रिलीज किया था मैंने। Yeah, it is achieved. I would like to tell my listeners and viewers this: both of these podcasts have achieved like certain milestones. जो हमें mention आप मतलब काफी बार मैं जैसे देखता रहता हूँ top charts में on different podcast listening apps. So again, this started in 2020. और आप जो रिकॉर्ड करते थे आप दोनों उस कौन से सॉफ्टवेयर के जरिए, जैसे आपने कभी इसका जिक्र भी किया था? हाँ, तो इनिशियली ना हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियली हम लोग सोचते थे कि हम लोग बात करेंगे आपस में, विल गेट ऑन अ कॉल, विल टॉक टू ईच अदर, एंड हम लोग ना अपने मोबाइल पे एक डॉल्बी ऑन करके एक ऐप है बहुत अच्छी, व्हिच गिव्स यू लाइक अ वेव का आउटपुट देती है आपको, डॉट वेव फाइल का, व्हिच इज लाइक वेरी हाई क्वालिटी ऑडियो। तो पहले हम लोग ना उसके थ्रू करते थे, हम लोग बात करते थे, कॉल पे आते थे और डॉल्बी ऑन रिकॉर्ड करके फिर पोस्ट में सिंक करके मैं रिलीज करता था। पहले almost 25-30 एपिसोड ऐसे ही किया, which then I realized is a big headache. Like वो करना ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। So then we started researching, we landed up on a platform called Zencastr, which till date is our go-to platform. सारे एपिसोड्स मैं वहीं पे करता हूँ, be it Namaste India, Socially Desi, मैं सारे एपिसोड वहीं पे करता हूँ। It's an amazing platform, lag free platform है, auto sync रहता है, तो I don't have to really worry about syncing it in post. तो ये उसका एडवांटेज है। That is the platform that we use. Zencastr. Yep. Okay, I would like to further tell my viewers, my listeners that I keep on, exploring new things. मैं workshops वगैरह attend करता रहता हूँ। जब मैं अपने research phase में था, तो उस time पे I also attended a workshop conducted by Anurag, and it was really helpful. And I guess it was in collaboration with Hubhopper, right? वो मैंने अटेंड की थी and it was really helpful about inviting guests and all. So जब मैंने अनुराग को इनवाइट किया था तो मैंने सबसे पहले डाल दिया था, क्योंकि अब हम टच में हैं तो अब मैं आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ। अदरवाइज ऑल्सो मेंशन कि आई डिडंट फॉलो द प्रोटोकॉल, आई शुड हैव ईमेल्ड यू, बट आई वुड लाइक टू से माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स इज वेरी हेल्पफुल एंड ही हैज आल्सो स्टार्टेड अ ब्लॉग दैट्स बाय द नेम askanurag.com, right? If I'm not wrong, spell it right, askanurag.com. तो उसमें भी काफी चीजें related to podcasting, related to marketing, a lot of insights are there, so you should definitely visit that particular website. And apart from this, आपने 2 podcast के बारे में बता दिया. What about the third podcast, Hustle Launch? So Hustle Lounge का जो inception था, that happened with a good friend of mine, Garima. So Garima is an entrepreneur. She runs her own travel startup. It's called Wandering Jane. It's an amazing startup. You guys should check it out. So I was just speaking with her, and suddenly this idea popped up. She had a lot of friends who had amazing, startup stories, right? They had amazing entrepreneurial journeys, and उनके बारे में ना ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था. Usually we talk about Ratan Tata and Dhirubhai Ambani and Mukesh Ambani. We talk about the billionaires and the people who have been in the industry for long, but जो upcoming stars है ना, उनके बारे में उनकी stories नहीं पता चल पाती हैं. So she pitched this actually. She was like, यार कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या साथ में मिलके? And because I already had a couple of podcasts, थोड़ा बहुत मेरे पास एक leverage था, which she said कि यार थोड़ा हमें advantage मिल जाएगा. I said बिल्कुल करते हैं यार, let's do that. So हमने first season किया, उसके 8 episodes 8 guests के साथ मिलके हमने पूरा curate किया. तो उसमें idea ये था कि उनकी hustle बेसिकली एक स्टार्टअप फाउंडर की ना हसल क्या होती है, राइट, उसकी डे टू डे हसल क्या है उसकी लाइफ में. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि सुबह आ गए ऑफिस में बैठ गए. स्टार्टअप बाहर से बहुत ग्लिटरी लगता है, लेकिन अंदर उसमें कितनी दलदल है और कितना आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है ना, हसल करना पड़ता है, उसके बारे में नहीं पता लोगों को. सो वी वांटेड टू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट आउट, एंड दैट्स हाउ द हसल लाउंज स्टार्टेड. When you're revealing this, मेरे दिमाग में वो TVF Pictures का season 1 season 2 चल रहा था अभी. Definitely, it's a part. Yeah, definitely. So, great to know. So, इसका अगला season when you're planning, if you can just, if it's a suspense, whatever you can reveal here. Only that thing. नहीं, suspense as such नहीं है, अभी out तो नहीं हुआ है, but the idea is we want to do it this year. But because I'm also kind of traveling and busy, and Garima is also kind of tied up,
So we are thinking कि कौन सी dates ऐसी हो सकती हैं, because the idea is कि another 8 episodes for season 2, सारे guests को line up करना, उनके साथ पूरे episodes को record करके produce करना. I think that will take some time, so at least a month long production time and then 1 month long editing and promotions. So 2 महीने we are thinking around November December to launch this. Let's see how things work out. So अगर hopefully November December में launch हुआ तो आप ही के platform के through उसको launch करवा देंगे. Oh, great. So I hope and I wish you all the best in advance. I hope जल्दी से जल्दी उसका एक season हमें देखने को मिले, definitely. Now coming on one of the most important topic, एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपने उसके बारे में जो आपका recent post था उसी के बारे में था, your recent blog about that is podcast monetization, and specifically you have covered the monetization aspect of the audio content. All right. Yeah. So इससे पहले हम इस पे डिस्कशन शुरू करें, चर्चा शुरू करें, मैं कुछ recent developments को ध्यान में रखते हुए, like the announcement of podcast feature by YouTube, plus the adaptation of podcast by YouTube Music, जो भी US में लॉन्च हो चुका है, यहाँ पे आना बाकी है. So इन दोनों चीजों को कंबाइन करके what is your insights on the monetization aspect? ये सबसे ज्यादा सर्च इसी के बारे में होते हैं, कमेंट्स भी इसी के बारे में आते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओ, आप पूरा अपना रिसर्च करो, बट सवाल अभी भी यही रहता है. एंड डेफिनेटली दिस इज आल्सो द इंस्पायरिंग एस्पेक्ट टू स्टार्ट समथिंग. मोनेटाइजेशन ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक मोनेटाइजेशन के बारे में हम लोग इस एपिसोड में आगे और डिटेल में शायद डिस्कस करेंगे, बट टू टॉक अबाउट कि हाउ यूट्यूब इज एंटरिंग द एंटायर पॉडकास्ट मार्केट. इफ यू लुक एट गूगल के पॉडकास्ट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म सेटअप था, right? But the problem was nobody was going to Google Podcast to really listen to a podcast, right? Either they were going on Apple Podcast या फिर वो लोग Spotify में जा रहे थे. These were the top 2 platforms जहाँ पे usually लोग सुन रहे थे, right? उसके अलावा ठीक है, iHeartRadio है और भी अलग platforms हैं, people है ना. तो ठीक है, all those platforms are there, but these are some of the biggies. Now Google, of course, you know, वो थोड़ा FOMO हुआ उनको, and they realized कि यार वीडियो में they are number 1, right? Nobody can really beat a video search engine like YouTube. तो उन्होंने बोला मेरे पास ऑलरेडी गूगल पॉडकास्ट है, व्हाई डोंट आई लेवरेज दिस एंड यू नो मेक माय यूट्यूब मोर फोकस्ड ऑन ऑडियो आल्सो, राइट? क्योंकि आज की डेट में हर एक पॉडकास्टर, यूजुअली मोस्ट ऑफ द पॉडकास्टर्स इन द यूएस एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, एटलीस्ट दे आर पुटिंग ऑल देयर पॉडकास्ट्स एज अ वीडियो फॉर्मेट ऑन यूट्यूब. प्रॉब्लम क्या आती है, 3 घंटे स्क्रीन पे बैठ के मैं तो नहीं देख पाता, राइट? जो रोगन का भी, इफ आई हैव टू गो ऑन दी स्पॉटिफाई ऐप एंड जो रोगन का पूरा 3 घंटे का पॉडकास्ट में वीडियो में देखूं, दैट इज लाइक मैंने आज तक नहीं किया. मे बी देयर आर सम सर्टेन वेरी लॉयल फैंस जो एक्चुअली 3 घंटे बैठ के देख रहे हैं, which may be interesting, but मेरा क्या होता है 30-40 मिनट्स के बाद थोड़ा सा ना, that focus, I lose that focus and I want to switch to an audio. I would like to add on just one thing. आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि एक तो थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म भी आजकल, जैसे रील्स, शॉर्ट्स, प्लस आजकल तो 50 मिनट का वेब सीरीज का एपिसोड भी हमें बड़ा लगने लगता है, जब 50-55 मिनट का जाता है. तो या प्लीज कंटिन्यू. करेक्ट. सो दैट इज द ट्रूथ, राइट? सो अटेंशन स्पैन वैसे ही हमारा बहुत लिमिटेड है, और उसमें यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी टू लुक एट अ लार्ज 2 hour 3 hour कॉन्वर्सेशन ऑन अ वीडियो, बीइंग अटेंटिव, मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चैलेंजेस हैं. सो आई थिंक दैट इज वेयर दे थॉट कि क्यों ना इस तरीके का किया जाए. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस तरीके के फीचर्स इंडिया में भी जल्दी से लॉन्च कर दे यूट्यूब, जहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो बात आती है. इफ लेट्स से यू हैव द सिमिलर यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम जो आपने वीडियोस के लिए किया हुआ है, इफ यू कैन हैव अ सिमिलर concept for audio also, कि let's say for example 1000 आपके subscribers होने चाहिए, 4000 hours का आपका listen होना चाहिए आपके podcast में, and you get monetized by YouTube, I think that will be the best thing that could ever happen in the podcasting industry. I think there are different ways to monetize your content, but if a platform automatically helps you to get monetized, I think that'll be the biggest thing. That will be amazing. Yeah. So I'm really looking forward कि इंडिया में कैसे लॉन्च होता है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं. एंड इंडिविजुअल podcasters like you and I, we are not backed by a studio, right? So जब हम लोग individual contributors, जब हम लोग पैसे बनाने लगेंगे, that is where the industry wins. Definitely. And one more thing to add on, if I talk about the listener base, the creator base or the base of users, YouTube की बात करी जाए तो if I just talk about India as a country, अगर यहाँ पे YouTube as a platform सबको मालूम है,
कहीं जगह पे आप इवन इन मेट्रो सिटीज एट रूरल प्लेसेस लोगों को अगर आप कहीं जिक्र करोगे स्पॉटिफाई एप्पल पॉडकास्ट बहुत लोगों को भी नहीं पता होगा, बट यूट्यूब तो डेफिनेटली पता होगा। तो आप बिल्कुल सही आपने कहा कि उन्होंने बिल्कुल इस बारे में सोचा होगा कि व्हाई नॉट, क्योंकि जैसे द बिगेस्ट लिसनर बेस एंड द रीडर बेस, सॉरी द बिगेस्ट व्यूअर बेस एंड द रीडर बेस, क्योंकि अगर जो लोग जाते हैं कुछ सर्च करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो गूगल पे जाते हैं, कुछ वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाते हैं। सो अब जो चीज की सिर्फ कमी रह गई है वो सिर्फ लिसनर्स की है। सो आई थिंक दे आर डेफिनेटली लुकिंग टुवर्ड्स इट। नाउ वी आर फर्दर कमिंग ऑन द मोनेटाइजेशन पार्ट, जिसके बारे में जैसा अगेन आई विल मेंशन दैट यू हैव रिटन अ ब्लॉग अबाउट इट, उसके बारे में आप फर्दर व्हाट आर योर इनसाइट्स? सी मोनेटाइजेशन, आई थिंक बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं मोनेटाइजेशन को फॉर पॉडकास्ट, बिकॉज वही जो मैंने अभी कहा कि YouTube बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोगों ने देखा है लोगों को पैसे बनाते हुए, दे हैव सीन देयर क्रिएटर्स ग्रो, राइट? तो लोगों को ऐसा लगता है कि, और ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि मैं YouTube शुरू करूं या पॉडकास्ट शुरू करूं, यू नो, इनिशियली जब कोई भी क्रिएटर सोच रहा होता है, एंड आई थिंक दोज आर वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस टू हैव। लेकिन लेट्स से आपने पॉडकास्ट एक शुरू किया है, मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आपके पॉडकास्ट कंसिस्टेंट नहीं है, लेट्स से अगर आपने वीकली कमिट किया है ऑन अ थर्सडे एट 10 AM एवरी थर्सडे, इट शुड कम एट 10 AM ऑन एवरी थर्सडे। If it is not happening for the next, let's say 20-30 episodes, I don't think आप actually में serious हैं to get monetized, right? People want to start off and वो चाहते हैं कि पहले एपिसोड से ही पैसा बनने लग जाए, which is impossible for any platform. It is not possible on YouTube also, right? So even if you're a YouTube channel, आप ये नहीं सोच सकते कि पहले डालते ही वीडियो को मैं monetize हो जाऊंगा, which is very rare unless it goes viral for XYZ reason. It's once in a blue moon. Once in a blue moon, right? So वो नहीं हो सकता है, and वो expectation जो कर रहा है, I think that is not a real creator in my sense. मैं बहुत bluntly बोलता हूँ लोगों को, and when people ask me also कि यार अनुराग मैंने 5 एपिसोड बना दिए, मोनेटाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बोला भाई 5 एपिसोड में नहीं होगा if you are thinking that you want to get monetized. To give the listeners and the viewers a perspective, I'll tell you Namaste India के first 100 episodes, मतलब first 100 days we had less than 5,000 listens. 100 एपिसोड्स में भी 5,000 लिसन नहीं आए थे। हर एपिसोड में 4 या 5 लिसन आते थे, उसमें से एक मेरा एक शिवम का होता था, ठीक है? हम बोलते थे कि यार हमारे घर में 4-4 लोग और है तो कम से कम 10 व्यूज तो आने चाहिए थे एक पॉडकास्ट में, वो भी नहीं आए, 8 ही आए हैं। इसका मतलब घर वाले भी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? तो आप ये समझिए कि कंसिस्टेंसी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, एंड व्हाट हैपेंड वाज 100th एपिसोड में वी वर हियर, लाइक कुछ भी नहीं लिसन्स आ रहे थे, अचानक से नेक्स्ट 50 एपिसोड्स वी वेंट टू 1 लाख। From less than 5,000 to suddenly 50 episodes में 1 lakh पे पहुंच गए, and then you know we hit 1 million also. So the idea was कि आप जब तक consistent नहीं होंगे तो monetization का तो अब you know that kind of thinking is wrong, right? Unless you're a celebrity who is backed by a studio and आप एक sponsorship already आपको मिल रही है studio की तरफ से, and you are doing something on your podcast, I think that is a different game. But I'm talking with respect to अगर आप हमारी तरह एक individual you know independent podcaster हैं who is not backed by any you know giant, or let's say we are not already famous on social media, अगर वो situation है तो consistency is number 1. ये तो चाहिए ही चाहिए आपको। ये होने के बाद then you need to figure out कि आपकी नीश में, जिस नीश में आप, of course I will not talk about you know कि कैसे आपको नीश सेलेक्ट करना चाहिए, क्या I'm hoping people are doing that. तो मोनेटाइजेशन के पॉइंट पे फिर आपको फिगर आउट करना है कि आपकी नीश में then who are the brands that you can work with, because honestly platform level पे monetization is very rare, right? So वो आपको, मुझे नहीं लगता कि उसमें पैसे बनेंगे. If you really want to make money, you need to really push and figure out who are the brands. Let's say आपका podcast is around shoes, you know, so you need to figure out, can Nike be a potential sponsor for your season, right? Can Reebok be a potential? और Reebok, Nike तो बहुत बड़े brands हो गए. मैं कह रहा हूँ किसी छोटे ब्रांड को पकड़ो, अपने किसी लोकल ब्रांड को पकड़ो. Let's say Neiman's को आप पकड़ लो. Neiman's is still a young brand. Can Neiman's be your sponsor? So I think that is where you need to start, then figure out. You need to become a salesperson, basically. Marketer, salesperson खुद ही को बनना पड़ेगा. And then you need to start pitching to these brands, and आपको हर दिन pitch करना पड़ेगा, build relations with them, right? So that eventually
somebody might come on board and say कि चलो ठीक है experiment आपके साथ करके देखते हैं. So I think these are the first two things that you should do. First is consistency. ठीक है, अपने podcast का establish करिए अच्छे से, right? Make sure that you also connect with your community managers of different platforms, right? अगर Hubhopper में है तो do you even know who's your community manager at Hubhopper, right? Yes. If you are on Gaana, do you know Gaana में कौन है community manager? JioSaavn में कौन है? Like these people, उन लोग के नाम, उनके नंबर saved होने चाहिए आपके पास, and you should build relations with them, talk to them, right? एक आपको ना उनके साथ जब तक आप networking नहीं करेंगे तब तक, let's say tomorrow आप ही का let's say podcast पर चर्चा का कोई एक amazing episode आ रहा है जिसमें एक बहुत ही amazing आपको sponsor भी मिल गया है. अगर आप उस पॉडकास्ट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स, देन आपको व्यूज उतने अच्छे नहीं मिलेंगे. यस, बट अगर आपके पास कम्युनिटी मैनेजर्स का सपोर्ट है तो आप उनको यू कैन जस्ट रीच आउट टू देम एंड यू कैन से हे व्हाट, आई एम हैविंग दिस एपिसोड, बहुत अमेजिंग एपिसोड बनाया है, XYZ गेस्ट है इसमें, और व्हाट स्पॉन्सर भी मिला हुआ है यार, प्लीज कैन यू हेल्प मी पुट अ बैनर ऑन द ऐप होम पेज, मेरा बैनर डाल दो ना यार एक हफ्ते के लिए. They would do it. I mean, there's nothing that like why wouldn't they do it? Like So I think ये छोटी-छोटी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो थोड़ी ट्रिक्स भी कह सकते हो, बट ये स्ट्रैटेजीज हैं ओवरऑल जो आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे व्यूज ला सकते हैं, इवेंचुअली अपने स्पॉन्सर्स को भी खुश रख सकते हैं. I think what you mentioned about community manager, that's a very important point. मुझे लगता है I can say important timestamp of this particular episode. क्योंकि monetization के लिए consistently, ठीक है आपने बिल्कुल सारी सही बात बोली, but ये जो आपने बात बोली बहुत ही, I think it's like something point to be noted. Alright. Okay, so anyways, further coming on the earning potential. Actually, जैसे अभी क्या होता है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि video format and audio format. Now in terms of the platforms, the monetization, जैसे आपने कहा कि brands को pitch कर सकते हैं, that's another part. But further add on to this, the YouTube has already announced it, तो वहाँ पे भी शायद कोई इसका creator या AdSense इसके बारे में काम कर रहा होगा. Coming on this, pitching the brands. Has it become little bit in terms of pitching to them, in terms of writing the emails? Has it become little bit easier after these AI tools? मतलब आपने वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया होगा. मैं एक्चुअली ईमेल्स के थ्रू पिच नहीं करता हूँ. ईमेल्स के थ्रू नहीं करते हो? ये जो एक एग्जांपल याद है बस. हाँ, बिकॉज आई टेल यू, emails पे ना on a daily basis the amount of emails and promotional emails that you get is overwhelming, right? So let's say यही example लेते हैं, अगर आपको Nike को reach out करना है somebody in their let's say marketing team या फिर promotional team को या जो भी brand team है उनको, I would rather go on LinkedIn, and that's why if you look at my LinkedIn also, it's optimized to a level where people can just look at my LinkedIn profile and figure out कि मैं एक podcaster हूँ. Yes. Right? They should look at it and figure it out. So what I do is first I optimize my LinkedIn and then I start to build connections on LinkedIn with my sponsors. Right? Of course, मतलब मैं Nike के CEO को जाके नई friend request भेजूंगा. I will start with somebody who is accessible to me. Yes. Right? So I think creators should start figuring out who is that person in their sponsorship का जो target उन्होंने audience shortlist किया है. Who are the people that they can easily connect to? Right? So, in anybody's case, it can be, let's say, somebody in the creative department or somebody in the marketing department, कोई marketing manager हो सकता है. Send them requests, send them a personalized note. You can make it through ChatGPT, जैसे भी आपको बनाना है, that is completely up to you. But this is the way I do it. तो मैं उनको LinkedIn पे I start approaching them, reaching out to them, and मेरे content जो मेरे podcast के around या फिर जिस niche में मैं हूँ उसके around मैं LinkedIn पे डालता रहता हूँ, so that if they accept my request also, I don't immediately sell, right? I don't immediately sell. कि भैया हर्ष ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया, हर्ष को उसी वक्त रीच आउट कर दिया, हर्ष मेरा पॉडकास्ट पे स्पॉन्सर कर दो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ. So you need to warm them up, you need to warm them up and then share some details. अपने पॉडकास्ट के बारे में बात करो, casually get on a call with them someday, and then that is where you understand कि यार ये बंदा क्या मेरी हेल्प कर सकता है. अगर नहीं कर सकता है वो बंदा, तो फिगर आउट के उसी के थ्रू फिगर आउट के कौन कर सकता है, तो आस्क हिम कि यार किससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. आई हैव एन अमेजिंग पॉडकास्ट एंड एक अमेजिंग गेस्ट आ रहा है मेरे पास एंड ब्ला ब्ला ब्ला. That is where they will get interested. Emails, I don't think a lot of people are opening unless you are sending, let's say, 100 emails a day. Maybe शायद तब आपके पास एक दो रिप्लाईज आ जाए वापस. Some open rate, yeah. हाँ, some open rate आ भी गया तो eventually people may not really write back to you.
राइट एंड पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजना बहुत जरूरी है. आई कांट रियली से कि आई लव योर कंटेंट, आई लव योर शूज, यू नो, यू हैव टू राइट समथिंग वेरी स्पेसिफिक टू व्हाई यू आर रीचिंग आउट टू देम. So that is one. The other way that I look for sponsorships is through PR firms, right? So I work with a lot of PR companies for my podcast, more than 8 PR companies for my podcast. So the idea is that, you know, because they are bringing in guests for me, so eventually on the other hand, it's a barter. So if they are bringing me guests, then I also, you know, reach out to their network for sponsorships. So I ask them, take their help कि यार उनका कोई ब्रांड है जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को स्पॉन्सर कर सकता है एंड ऑल. तो ये दो अप्रोचेस मैं करता हूँ, थ्रू पीआर कंपनीज एंड थ्रू LinkedIn. And I would like to tell my again I would have to refer that आपने specifically mention किया था on group chats also that LinkedIn is the, I'll specific word, gold mine. LinkedIn is the gold mine for reaching out to sponsors and for you know, for monetizing your podcast in the long run. So yeah, I can clearly remember that. आपने तभी इसके बारे में mention किया था. True. It is a gold mine. मतलब अगर आप एक content creator हैं आज की डेट में, if you look at LinkedIn का largest base is Indians. Largest base Indians ही है LinkedIn का. ठीक है, it is owned by Microsoft. ठीक है, and now they have creator programs also. ठीक है, so it is very obvious कि LinkedIn is actually promoting creators to be active on their platform. So why aren't we taking advantage? Instagram बहुत ज़्यादा video focused हो चुका है and it's already a very saturated market. वहाँ पे भी आप अपना mark बना सकते हैं, but it will take some time and effort for you to do that. LinkedIn में you can actually reach out to the right kind of people for your sponsorships and all. So don't get confused. A lot of people get confused कि Instagram पे मैं sponsors को ढूंढूंगा. नहीं, LinkedIn पे sponsors को ढूंढो, Instagram पे अपने viewers को ढूंढो. So I think that is what we need to figure out. LinkedIn में थोड़ा एक सीरियस अप्रोच भी तो आ जाता है ना. अगर Instagram में आप किसी को कैजुअली यू आर फॉलोइंग समवन और वहाँ पे तो वैसी स्पैम्स और बहुत सारी चीजें होती है LinkedIn पे. सॉरी, Instagram पे, I'll correct myself. LinkedIn पे थोड़ा कम होता है. तो आई थिंक LinkedIn पे थोड़ा ज्यादा सीरियस अप्रोच के साथ काम हो सकता है, if I'm not wrong. Yeah, serious approach के साथ काम हो सकता है. And if your profile is optimized, your profile should look like a creator's profile who has a podcast. अगर आपकी profile optimized है, then you will not look like a spammer. Okay. Yes. And when you have quality conversations with your target sponsors, they will actually appreciate you reaching out in this way. ईमेल भेज दोगे, कोई खोलता भी नहीं है उसको. आधे से आधे ईमेल तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल्स पे जाते हैं वो वैसे ही स्पैम में चले जाते हैं. तो बहुत ही मुश्किल है उस को ब्रेक करना. यू हैव लिंक्डइन यार, व्हाई नॉट यूज इट? Definitely. Anyways, another thing about the promotional part, this is something honestly I have not explored. That is the promotion of podcast through threads. Honestly, मैंने भी बिल्कुल explore नहीं किया. And it's a very basic question, but again, it's a new insight for me because I would like to add something on that. Threads को to be honest मैंने भी अभी तक explore नहीं किया है. I opened my account on Threads like, you know, millions of people who were doing it, and I was reading this report the other day कि 100 million उनके they had 100 million users in less than a week, right? But उनका जो drop हुआ rate you know of people who are using it, so daily active users from 45 million dropped down to 20 million. So and this you know what I realized was that because you opened a copycat app of Twitter, right? So initially, because you had Instagram and you had just one button approach to making an account on Threads, it became like a one-click option for people to just open their account on Threads. But the problem is that जो OG है, right, Twitter, you can't really bring that down that easily. It's not that easy. And the problem is now what this does is, I mean, I'm just like digressing from the topic, but what this does is this will create an app war across the industry. You know, yes. What does it take for a LinkedIn to start a Threads like app or a Twitter like app? It's just technology, right? वो तो कभी भी कर सकते हैं. Snapchat भी कर सकता है, right? So the longer run the challenge will be for podcasters like you and I to figure out कि मेरा strong platform कौन सा है. Where is my audience? Like for example, for my podcast, my business podcast, audience is on LinkedIn, right? So they would like to listen to those kind of insights on LinkedIn. So I will heavily promote my podcast on LinkedIn.
threads, Twitter, Instagram, these can be again explored with respect to आपका content कैसा है. Yes. So coming back to a tip, maybe threads I have not explored as such. मैं कुछ उसमें डाल के देखे मैंने threads एक दो last week में, but I didn't really see the value. Twitter में I think the conversations are still better so far. I don't know how people are now leveraging threads, but I would use threads only if I really see कि मेरे podcast का वहाँ पे sense बनता है and I can engage in conversations. क्योंकि अगर मैं conversations में engage नहीं हो पाऊंगा, then I will not be able to really benefit. वरना खाली इसी I'll be just spending time. Yes. And time is limited. आपके और मेरे पास 24 घंटे ही हैं, सबके पास 24 घंटे हैं. So we have to optimize our time and optimize which platform is appropriate for us. Is appropriate. वरना यार देखो 10 social media platforms हैं, 10 के 10 में आप डालते रहो हर दिन. You will feel good about yourself, but is it really converting into the metrics, and is the metrics going up for your listens, or are you getting sponsorships? I think वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. हाँ, मतलब थोड़ी बहुत अगर एंगेजमेंट आती है, जैसे जो मेन हो गया, जैसे आपने लिंक्डइन का जिक्र किया, वैसे अगर कह सकते हैं थोड़ा बहुत भी अगर एंगेजमेंट आता है, कंसिडरिंग अ 360 डिग्री अप्रोच, तो मे बी थ्रू सोशल मीडिया स्केड्यूलिंग टूल्स यू कैन जस्ट पोस्ट द सेम मैसेज एंड पुट इट अक्रॉस. इतना आई थिंक कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कहाँ से सबसे ज्यादा जो आपकी टारगेट ऑडियंस, लिसनर बेस एंड द ऑडियंस, पुट एवरीथिंग, कंबाइनिंग एवरीथिंग, ऑल द विजुअल सर्कल जहाँ से आपको मिलता है. एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द, इफ you can just tell about it, LinkedIn Accelerator, LinkedIn Creator Program, you are part of it. So you can just tell about that if possible. So LinkedIn Accelerator Program actually started 2 years back in the US. The first edition was in the US. So they had around 200 creators that they selected in the US. Right. And then the next year, 2022, is when they came to India, because India was their biggest market. Yes. So they came here and they said, you know what? They said कि applications are open, creators can apply, and there was a huge application. आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होती थी, lot of questions, and then a video you have to create a video and then share it with them. And उसमें से 200 creators को select किया गया था. Fortunately, I was one of them amongst the other 199. Amazing creators. I think the idea was that LinkedIn wanted to, like I said during this episode also, कि LinkedIn already is promoting creators on its platform, and this is one of the reasons why. So they did this accelerator program where they helped people, creators like me and others, to take the best advantage of LinkedIn features and promote us, right? So they were helping us with the kind of trending topics which are going on LinkedIn, so we can write about it, or maybe if I'm a podcaster, I can talk about it on my podcast. We can use some tools like जैसे जो audio tool आया था LinkedIn का, it was not out in the public, but creators को उसका early access मिल गया था, so that we can experiment and give feedback कि भैया कहाँ गड़बड़ हो रही है, where you can improve it. So this is what the program is. The program is essentially to help you get better as a creator on LinkedIn, to help you make better posts and all, and of course, give you a boost on LinkedIn so that you can become better and better at what you do. So eventually it helps both, right? It helps you as a creator also, and LinkedIn as a platform also. Definitely. So Anurag, on discussing about various topics, podcast monetization, about YouTube music, everything overall about LinkedIn, one of the very rare चर्चाs, and ये ऐसा होता है कि मतलब ऐसा चाहती नहीं कि चर्चा खत्म हो इतनी ज्यादा, but of course there is a foundation of time. So thank you so much for sparing a very valuable time and sharing so many insights about this. So I'm looking forward to your, of course, your existing podcast and your upcoming podcast of Hustle Launch. And again, I wish you all the best for that. And further, thank you so much for being a part of Podcast Per Charcha. No, thank you so much, Harsh, and really enjoyed this conversation. I think इस तरीके से touching base on monetization, touching base on how you can promote your podcast. I think these are things that creators like you are bringing on to the platform. People are listening, and I hope your audience gets benefit out of this. And I'm looking forward कि ज़्यादा से ज़्यादा creators get monetized in one way or the other, be it from YouTube or be it from a sponsor. Doesn't really matter, as long as you enjoy what you do and you are getting something in return. I think that is the best thing. So thank you so much for having me. It was fun.
And last but not the least, with this kind of conversation, I can say this could become a series. If I'm really maza aaya baat karke. So in with upcoming podcast developments, definitely maybe once or twice in a year, I would like look ahead कि अगर आपको हम again we can have some interesting charchas about the podcast industry. These two topics, Definitely. podcast and voiceovers, voice acting. I can मैं 24 घंटा बैठ सकता हूँ, ऐसी मेरी capacity है. But of course there is a time foundation. So again, thank you so much. And last but not the least, your blog is by the name askanurag.com. Yes. I'll share the link. And you are through your particular blog, you're active. कहीं आपको जैसे the people, the audience, the users can reach out to you through that. Yeah. So people can reach out to me, and askanurag.com hai simple naam. So you can search me there. And there I usually talk about branding, content marketing, and podcasts. So these three things are really important for anyone, be it a business, an entrepreneur, or a creator. So उसी के राउंड में लिखता रहता हूँ. Every week I usually try to put up one blog post at least. वो कर रहे हैं, बाकी देखते हैं what else I can do with it. वो वेबसाइट तो बना दी मैंने, but yeah, I would like to get feedback from your audience also. You guys can go to askanurag.com, share your feedbacks. कुछ गड़बड़ है उसमें, या if you think I can improve. खुद ही से बनाई है मैंने, तो बहुत ज्यादा मुझे पता भी नहीं है उसमें कैसे WordPress में बना दी थी मैंने, but yeah, feedback will help me also improve. Definitely. I'll share the link in my particular episode description. And I read some of the blogs. It was amazing. Very insightful discussions about the industry and everything. So yeah, finally, thank you so much. And yeah, I'm looking ahead to have more conversations in the future. Thank you, Harsh. Looking forward.